basically, the best part is this whole trailer goes global as we speak in the next few seconds now. In UK, in LA, and in fact across the whole lot of other countries. So this is very unique, and I'm really excited to be part of this film, this journey, this ordeal that has taken a little long, but I think it's totally worth it. In fact, the film is not out for another few months, 2-3 months, but I really hope you guys enjoy the trailer. I haven't seen it, so first time I'll be watching it with you. And yeah, all my love to Judi Dench, Stephen Frears, Universal Studios, Focus Features, BBC Films. I mean, the list is endless. I worked with some brilliant people और बहुत मजा आया. I think the preparation on this film is something I will take with me for a very long time. 3 seconds. Okay, all right, screw it. Let's have fun. Did you guys like it? Did you guys like it? Oh, England though. But anyway, I'm so glad you guys liked it. This is to all the Facebook peeps out there. And yeah, let's start. Yeah. ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छा प्रोमो है और हर दूसरे फ्रेम में हर फ्रेम में आप दिख रहे हो. ये बहुत मुश्किल से ऐसा होता है. क्या कहेंगे आप? थैंक यू. नहीं, I know बहुत टाइम बाद ऐसा मे बी हुआ है, and हम लोग को बहुत अच्छा लगता है that we are exchanging notes on a global level. और ये एक बहुत ही प्यारी फिल्म है, ट्रू स्टोरी है, एक बायोपिक है, तो इसमें बनता है. एक इंडियन की स्टोरी है, एक उन लोग की रिलेशनशिप है, क्वीन विक्टोरिया एंड अब्दुल करीम, हु वाज फ्रॉम आगरा. और ये एक सर्वेंट की हैसियत से गए थे, लेकिन देयर वाज मच मोर टू हिम विच यू विल सी वंस यू सी द फिल्म. और इन दोनों के बीच एक ऐसी फ्रेंडशिप थी जिसके बारे में इनफैक्ट रॉयल फैमिली ने आज तक कभी बात नहीं की है. ये धोखेबाज है यार ये. Sorry. Anyway, the royal family has never spoken about this, but there's a beautiful account. Shabani Basu ने इसका account दिया है अपनी किताब, which is titled, which has the same title, Victoria and Abdul, and उसमें काफ़ी detailed version दिया हुआ है. But I have to confess, मैंने वो किताब पढ़ी नहीं. I stuck to the script, और उसकी वजह से मुझे 8-10 और किताबें पढ़नी पड़ी हिस्ट्री पे. But that was preparation mode, और I think बड़ा interesting process that I was part of. I thought it was Stephen Frears, it was Judi Dench, Michael Gambon. I mean, these are legends यार. तो I got lucky. अली, सब जानते हैं कि हॉलीवुड की फिल्मों में काम पाना या मौका पाना बहुत मुश्किल होता है. बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. इंडियंस में भी बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो क्रॉस वर्क करके गए हैं वहाँ पर. हम जानते हैं कि आपने फास्ट एंड फ्यूरियस में एक छोटा सा रोल किया था, तो ये रोल आपको कैसे मिला, इसके लिए क्या मशक्कत करनी पड़ी, वो प्रोसेस के बारे में बताइए. और जूडी डेंच के साथ आपने काम किया, तो पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि जूडी डेंच के साथ आपको काम करने का मौका मिला? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, अंदर से खुशी हुई, क्योंकि इनकी फिल्में मैं मतलब बचपन से देख रहे हैं हम लोग, बड़े हुए हैं. मेरिल स्ट्रीप, जूडी डेंच, वेनेसा रेडग्रेव, ऑल दीज पीपल, एंड ऑफ कोर्स शी इज़ एन ऑस्कर विनर. तो उससे ज़्यादा आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर. मुझे ये आई वेंट थ्रू अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ ऑडिशनिंग. इंडिया में मैंने ऑडिशन दिया था, बल्कि मैं किसी के साथ बैठा हुआ था एक मीटिंग में. मुझे आई विश वन डे आई विल टेक दैट पर्सनस नेम, बिकॉज आई ओ इट टू दैट पर्सन. इंडस्ट्री की हैं, एंड उन्होंने कहा था कि ये एक फिल्म हो रही है यार, ऑडिशंस ख़त्म हो गए, आई डोंट नो, बट व्हाई डोंट यू ट्राई. तो मैंने फिर कास्टिंग डायरेक्टर को कॉल किया, नंदिनी को, एंड मैंने कहा यार आई जस्ट रिकॉर्ड इट, लेट्स हैव फन. फ़ोन पे रिकॉर्ड करके वील सेंड इट. और फिर मैं भूल गया था, बिकॉज 20-25 दिन बाद मुझे कॉल आया कि यार दे रियली लाइक्ड इट, एंड दे वांट टू सी अनदर वर्जन, एंड दे आर कमिंग डाउन टू इंडिया. They were still meeting other actors, and lots of actors. Matlab, I think they've gone through the entire list, which is fun, knowing that list. But I feel very privileged because there are some of my colleagues who I really respect, and I respect their work. And to be picked over them is, I think, is already a big award for me. लेकिन I think उसके बाद मैं स्टीफन फ्रीयर से मिला था. मेरी पहली मीटिंग हुई थी मेरे डायरेक्टर से. वो ऐसे क्या ना कि वो सोफे पे लेटे हुए थे, उनको डेली हो गई थी. तो उन्होंने कुछ ख़राब खा लिया था. बीवन किड्रॉन वाज देयर सिटिंग देन. शी, आई गिव माय होल क्रेडिट टू,
and Lee Hall, who's the writer of this film, also an Oscar winner for Billy Elliot. Um, I think I was one of his favorite choices. Stephen was not at first convinced with me because also I blame his condition at the time. फिर मैं लंदन गया, वहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट किए एक स्टूडियो में with other actors, and then I came back and finally मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था एक रेस्टोरेंट पे, तो मैंने बाथरूम में जाके कॉल ली क्योंकि वो डिक चिक साउंड बज रही थी, तो ये फिल्म एक बाथरूम में मैंने यस बोला है इसके लिए, बांद्रा के एक रेस्टोरेंट में. So that's I'm sorry. अच्छा, एक और सवाल कि जब आप पहली बार जूली डेंच से मिले तो क्या बात हुई? ऑब्वियसली आप एकदम हैरान भी होंगे, खुश भी होंगे, क्या बात हुई? और सेट पे जब आप काम कर रहे थे तो कुछ ऐसा वाकया जो खास हो बताने लायक हमसे शेयर कर सकते हैं? बहुत से वाकये हुए थे, मतलब हम लोग तो पूरे आई थिंक 50-60 डेज थे, लेकिन पहली दफ़ा जब मैं मिला था हम लोगों ने एक लंच किया था जस्ट टू मीट ईच अदर एंड ब्रेक द आइस. तो मैं ज़मीन पे आ गया था, मैंने पैर छुआ मैंने हाथ पकड़ा, मैंने गले लगाया, एंड you know, I think it was really sweet that she was very welcoming. She made me at ease, and I think that relationship began there उस दिन लंच पे लंदन में, close to a house somewhere I remember. और उसके बाद से we became friends, and I think that's the most important thing. मेरे लिए क्या है ना कि मेरा co-actor अगर अच्छा है, and especially if it's Judi Dench, very selfishly my job becomes very easy. It becomes half of what I need to do. And बहुत लोग ऐसा नहीं सोचते ना. I keep telling my colleagues also, or my friends, कि you know, it's better if your co-actor is better than you, because you are going to look better. And that's what happened on set. मतलब हम लोग कितने instances थे यार. ये Scotland वाला, if you saw that big mountain or lake, that was one of the first few scenes हम लोगों ने shoot किया था. बहुत ठंड थी वहाँ पे, मेरी हालत ख़राब हो रही थी, और just to stand straight was not possible. Not because ठंड थी, but इतनी wind चल रही थी, and I couldn't, you know, none of us could stand straight. और स्कॉटलैंड में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, midges. That is something you will understand. They are quarter of the size of a mosquito, लेकिन they really bite. They want us हमारे वाले पैर में किया, हमारा तो मच्छर और सब कुछ होता है. They're giving me nets or creams. नहीं. Next thing we know, we're shooting a scene on a boat right there in that lake. और हम लोग मतलब this was us, me and Judy. So it was hilarious because it was one shot. It was not cuts or anything, and it took 3-4 hours to shoot. So that was the beginning of this film. It started with insects, but I think it was a wonderful journey. सबकी life में एक before after होता है. I'd like to say this is my that, you know, after version. There's not much of a difference. At the end of the day, we do respect Hollywood because Hollywood is an older cinema than us. We came a little later, and technologically they are way ahead right now. But at the end of the day, the stories are similar, the emotions are the same. We have great scripts coming up in our country. We are doing very well. Some great cinema is coming. I'm very proud of it, and I'm not gonna, you know, just bail out and say हाँ अभी Hollywood हो गया. But I'm enjoying this ride because I think it's the one chance we as actors we are getting to share something and bring something to the global stage, to world cinema. I think that's really important. I think it's good, and it's amazing that I started my career with a small part in 3 Idiots, and I started my career in Hollywood with a small part in Fast and Furious. So it's funny, but it's interesting. Thank you. अली, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर. वैसे तो आपने आपका करियर बहुत छोटा है, भले हॉलीवुड हो या बॉलीवुड हो, लेकिन क्या एक फ़र्क आप पाते हैं जब इंडिया में काम करते हैं, इंडियन लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत प्रोफेशनल माने जाते हैं कंपैरेटिवली जब यहाँ पे काम होता है इंडस्ट्री में? I think we are quite professional. I mean, yes, there are. So you have to also take in budgets, you know, take in the productions that we go through. हमारे यहाँ इतनी फिल्में बनती हैं, I think sometimes बहुत छोटे बजट्स पे बनती हैं. तो क्या होता है ना, what we lose out on is then these small ethics की, you know, the professionalism is what we call on some fronts, or technology, or just sometimes the quality, unfortunately, and that's it. That's all. Otherwise, I think,
you know, today a lot of productions I've worked with here personally, I mean, we just did Happy Bhag Jayegi, Fukre I've just finished. I think they're wonderful, one of the most professional people I've worked with, and I'm very proud. But of course, they've been following this for years and decades, so we have to give it a little, thoda benefit of the doubt dena padega that they've learned that routine, and we're getting into it. So I think it's good time. Yeah, really. Thank you very much. Thank you very much. Started the interview, you said that you owe this film to perhaps a lady who helped you back the role. Really know कौन है वो कौन थी वो कौन थी? I shouldn't because that एक तो आपने नंदिनी का नाम लिया दूसरी कौन है Nandini was casting in India. Maybe in good time. I don't think, you know, I'll literally have to take her permission for this. She's not an actor, if that's what you're thinking, but you would know her. Yeah. Thank you. Any other questions? Is there a reason why you decided not to read the original book? That's a good question. I was pressured to, and I did start reading it. And no offense to Shabani, I mean, I love Shabani and her style of writing, everything, but I think Lee had written a very interesting script and he had a different take to it. And I didn't want to spoil it in my head because it was all about firsts. It was all about coming to England for the first time, and for me, you know, and experiencing that for the first time. And the script was structured in such a way that it was just a personal choice. It's nothing profound or कि वो कुछ मैंने उसमें मंत्रा लगाया. Unfortunately, in fact, because of that decision, मुझे 8 से 10 और किताबें पढ़नी पड़ी. So I ended up reading much more. Sometimes I did wish I'd just read the book and gotten away with, but I had to read a lot on the history of that time because of that. Thank you. Thank you very much for coming, guys.